I'm giving you a minute. Settle down fast. Very good. Okay. From row section, one child come forward near the mic and please tell me, do you want to do quadrilaterals first? Are you interested in doing quadrilateral questions first? Because today we are going to do miscellaneous questions of different chapters. Right? From quadrilateral chapter. Because what I feel is quadrilateral chapter is thought to be little difficult for many children. So I want to take few questions of this. Are you ready? Raise your hand. Are you interested in doing quadrilateral questions? Wonderful. Wonderful. So please write the question with me and draw a diagram also. I will be telling you clues also side by side. I'll be telling you with every question we will be writing note. Right? We will write the question, then we will write a note. Ki what is to be taken care in this. Right? Write down, find the value of x. Value of x. Now we are doing questions from quadrilaters. What else chapter you want to do? एक बच्चा आ गया कि मुझे बताओ. Which chapters are coming in your exam and which you want to do other than quadrilateral, which chapter you want to pick? Okay, sunflower से आगे आ जाओ. One child can come forward and tell me कि आपकी कौन से chapter आ रहे हैं exam में? Who is coming, beta? Your syllabus is same, all the sections, है ना? Which chapters are coming? Deputy से आप आ जाओ बेटा. Anyone can come forward. आपकी टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं? Yes बेटा. Lotus section से boys coming. Ma'am, simple and compound interest. Okay. Simple and compound वो आपका पूरा चैप्टर आ रहा है ना? Percentage वाला? नहीं. Okay, okay. What else बेटा? Probability. Probability. Okay. And this also you are saying, quadrilateral also you are saying. Is it? That's it? Ma'am, yes. Wonderful. Okay, sit down. I think out of these all, SI and CI, simple interest and compound interest, we have done so many questions of that. I hope there is no doubt in simple interest and compound interest. Raise your hand who say कि yes, it is clear. This topic is very much clear. ऐसे compound interest के बहुत सारे हमने question किए हैं. If you want, हम एक दो question pick कर लेंगे इसके. Otherwise, you can understand. Fine. Hands down, बच्चे. Hands down. Okay. Please draw the figure. Find the value of x. You will also draw it. First of all, draw a simple triangle. Okay. And then extend it like this. This angle is given to be 125 degree. This is x. And this is also 125. We have to find the value of x in this. In 8th class, maximum questions, they roam around about your exterior angles of a polygon. It could be triangle, it could be quadrilateral, pentagon, hexagon. आपकी सारी जो questions हैं mostly exterior angle पे depend करते हैं. ठीक है? And whenever only exterior angles, जैसे यहाँ पे दिए हुए triangle पे only exterior angles are given, apply the property of exterior angles only. Don't go inside the figure. फिगर के अंदर कौन से एंगल्स है कौन से नहीं है वी डोंट बॉदर एट प्रेजेंट. ओके, राइट डाउन नोट ओवर हियर कि किस चीज को आपने फोकस करना है. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगॉन. अब हम ट्रायंगल की नहीं बात कर रहे हैं. एनी पॉलीगॉन, कितनी भी उसकी साइड्स हो, इज ऑलवेज इक्वल टू 360 degree. It is fixed. It will never change.
बाई चांस मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इट कुड बी अदर फिगर ऑल्सो, हो सकता है उसकी 10 साइड्स हो, 8 साइड्स हो, 5 साइड्स हो, 7 साइड्स हो, वॉट एवर, उनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 रहेगा. फाइन. सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई. ठीक है, राइट डाउन नोट, प्रोमिनेंट करके लिखो and apply the value here. X plus 125 degree plus 125 degree is equal to 360 degree. अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है. मैंने यहाँ पे सी, यहाँ पे 3 साइड्स एक्सटेंड किए हैं मैंने, ए बी सी, हमारे पास ट्राइंगल था, इनको मैंने एक्सटेंड किया है. जब एक्सटेंड किया तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन गए. टेल मी, माय क्वेश्चन इज, I have made here 3 exterior angles. क्या वो 3 से ज्यादा भी बन सकते हैं? Is it possible? सोच के बताओ मुझे. If I draw a triangle over here, मैंने suppose यहाँ पे एक triangle draw किया है, मैं इसको ऐसे extend कर देती हूँ, इसको ऐसे extend कर देती हूँ, और इसको ऐसे extend कर देती हूँ. वहां पे कोई और साइड एक्सटेंडेड है, यहाँ पे किसी और डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है. टेल मी कि अगर मैंने यहाँ पे 3 एंगल शो किए हैं, 1 2 3, कैन वी मेक मोर? 3 से ज्यादा एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं? No. Who said no? Raise your hand. Who are confirmed? Very good. Very good. जितनी साइड्स पॉलीगॉन की होंगी उतने ही हमारे एक्सटीरियर एंगल बनेंगे. दैट इज फॉर श्योर. राइट. 5 साइड्स है तो 5 एक्सटीरियर एंगल, 6 है तो 6, 7 है तो 7. फाइन. तो हमारे ये 3 एंगल्स का 360 है. यहाँ पे मैंने दूसरी साइड एक्सटेंड की है, यहाँ पे दूसरी साइड एक्सटेंड की है, बट डजंट मैटर. यहाँ भी हमारे 3 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं और वहां भी 3 बन रहे हैं. ओके. ऐसे भी फिगर बना लो प्लीज इसके साथ. यू शुड नो कि हमारी जो डायरेक्शन है ना, वो कहीं भी जा सकती है. यहाँ पे आई हैव एक्सटेंडेड द बीसी साइड डाउनवर्ड्स, इट कुड बी एक्सटेंडेड अपवर्ड ऑल्सो. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके बेटा. यहाँ पे मैंने राइट साइड पे एक्सटेंड किया है, इट कुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो. प्लीज रिमेंबर. ओके. So this is the way we will go and you can find the value of x from here. I'm telling you the hint only. अब आंसर you can find, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, you can do at home, x की वैल्यूज की निकाल के you can see what is coming. I hope it is clear to everyone. Right? Let us draw one more figure of this kind. Will you find the answer? Because today I want to revise many questions related to this topic. ठीक है, I have given you big clue. Write down second question. Again, find the value of x. The value of x. Please draw a figure. I have a pentagon over here. Okay, and I have extended the sides. यहाँ पे x degree है. It is extended 70 degree. This is extended. It is sine given. Sine, only sine is given. No angle. वहां पे लिखा नहीं हुआ कि कितने डिग्री का एंगल है. Only sine is given to you. Okay, make it straight, and this is sine like this. पहले तो अपनी साइड्स को काउंट करो कि कितनी साइड्स हैं और मेरे एक्सटीरियर एंगल कितने बन रहे हैं. You know why? When we copy down the figure from the paper, na, by mistake we draw less number of sides. I want to count the sides. How many sides are there? 1, 2, 3, 4, 5. Please check करो अपनी नोटबुक में. Have you drawn 5 sides? और 5 sides को extend किया है क्या आपने order wise? It is not looking like 90, but in book it is given like this. In book it is given that this is 90 degree. So I have to suppose that way only. I cannot change it because book में लिखा हुआ है कि this angle is, representation is given. Degree is not written. Representation is there. Again, we are finding the value of x.
ओके, देयर शुड बी 5 एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमारी जो फिगर है उसकी 5 साइड्स है। ठीक है, सेम थिंग इज अप्लाइंग, जो अभी अभी हमने नोट लिखा था, दैट वाज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सेम थिंग अप्लाई होती है। नाउ हाउ टू राइट द आंसर। बेटा यहां पे आपको दिख रहा है कि दिस इज एक्सटीरियर एंगल, इसको आप 1 लिख सकते हो, इसको आप 2 मेंशन कर सकते हो, इसको आप 3 लिख सकते हो, इसको 4 और इसको 5। अपने आप उसकी नंबरिंग कर दो फिगर में। When your figure is neat and clean, everything will be visible. You can write down angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 360 degree. We know it is a property. Okay, now write their values. 1 की value क्या आएगी? It is not written here. Who can judge कि this is 90 degree? Raise your hand. Because sign is given to you. Wonderful, right? Be free to write down 90 degree. डरना नहीं है कि हमें तो दिया नहीं हुआ है. 2 was 60 degree. 3 was again 90 degree. 4 is we have 70 degree. And 5 we have x is equal to 360 degree. You can find x from here. Calculate, add करो और minus कर दो बस. That's it. Okay. So this is the way we go. One more question. Find the value of x, y, and z. You know why I'm picking these questions? Because such questions are very, very important. You will see no teacher can miss such questions जब भी पेपर बनाते हैं. Please find out x, y, z. PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. This is given. You have proper lines in your notebook. You can draw it better. ठीक है, स्केल की जरूरत नहीं है. पेन को हार्डली पकड़ो, इसको हार्डली थोड़ा सा प्रेस करो and draw a neat figure. And you know one thing I want to tell you. Here I have given PQRS is a parallelogram. Sometime आपको ये भी given हो सकता है that PQ is parallel to SR and PS is parallel to RQ. कई बार ये भी given हो सकता है, इसको भी लिख लो. हो सकता है आपको पूरा नाम उसको पैरेललोग्राम ना गिवन हो, लेकिन आपको हो सकता है ऐसे गिवन हो कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है. द मोमेंट इट इज गिवन यू हैव अ गुड क्लू इन फ्रंट ऑफ यू. बहुत अच्छा क्लू है आपके पास कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है. दैट्स व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम. I hope you know this question. Sunflower section. Third bench boy, please come. बॉल के साथ. Third bench boy, please come beta. Please give me hint how to do. We wrote the properties of parallelogram on that day, है ना? Yes, ma'am. Yes, beta. Do you know how to find x, y, z? No? Okay, it's okay. And sit and please listen to it carefully. Anybody else from sunflower section who want to tell me? कोई एक एंगल बता दो, या x या y या z, कोई एक.
Lotus section. Daffodil. कोई एक आधा बता दो. Not all three. If you don't know all three, you can tell me any one. Yes, yes. Please come. This is very important question, beta. Very, very important question. Such questions are very important. See here, this is a parallelogram. In parallelogram, what property you know? Parallelogram की angles की क्या property आपको पता है? हाथ खड़े करो जिसको पता है. We wrote on that day. हमने लिखी भी थी angles की properties parallelogram की. Yes, last boy, lotus section. Will you please come, beta? Either window side, window side. Please send him. What do you know about this? Yeah, Yes, y is also ma'am, angle Q is equal to angle S. Q is equal to S. Why? What is the reason? Opposite angles of parallelogram are equal. Wonderful. Okay. X आ गया आपके पास. Sorry, Y आ गया. Then, what are this? Okay, sit down. Very good. एक angle आपको पता है. You can write down that Y is equal to 110 degree. Why? Opposite angles. Write down the reason. Opposite angles of parallelogram are equal. ये property हमने लिखवाई थी आपको. You have read in your book also. Opposite angles of parallelogram are equal. Y is equal to हमारे पास 110 आ चुका है. How will you find X? Well, we wrote one more property of parallelogram. Angles की एक और property हमने लिखी थी. You can see your notebook. पीछे page turn करो, देख लो फटाफट से. Very good. Search it. Angle की हमने एक और property लिखी थी. Opposite angles equal होते हैं. Yes, this is right. What else? Very good. आ जाओ बेटा lotus section. Last boy. Very good. What is that property? ये mind से निकल जाती है. जो property अभी बताने वाला है वो. This property goes out to your mind, you know, because ये कभी कभी apply होती है. Yes, बेटा. Sum of adjacent sides are 180. 180. Wonderful. Adjacent angles होते कौन से हैं बेटा? On same line. On same line. Wonderful. Please sit down. हाथ खड़े करो जिसको पता है adjacent angles कौन से होते हैं. Very good. You can see adjacent angles over here. Y and Z are adjacent. X and Q are adjacent. You can write down Y plus Z is equal to 180 degree. Sum of adjacent angles. Write down reason. Adjacent angles. Adjacent angles are always equal to, their sum is always equal to 180 degree. Please remember it. जितनी बार लिखोगे, जितनी बार मुंह से बोलोगे, you will remember it. Okay, so here we have found Z is equal to 180 minus 110, which is equal to 70 degree. You have found Z. Now you know Z is equal to X. Opposite angles. You can write down X is equal to Z is equal to 70 degree. Opposite angles. Please remember, beta, make it a habit from 8th class only. In geometry, every step should be written with a reason. You can skip in 8th class, you can skip in 9th, but board exam में you cannot skip the reason. So make it a habit from today only. आपकी जितने भी geometry के steps होते हैं, you write the reason कि why these are so, why angles are same, why this is so, 180, why 90, why complementary, why supplementary, linear pair, vertically opposite. Write down. There are so many reasons. Okay, so now your question is complete. You have come to know X, you have come to know Z, and you came to know Y also. This question comes of 3 marks. Just imagine. इतना easy question था. 3 marks का question आता है because there are 3 angles you have found. जब 3 marks, 3 angles निकाल रहे हो, 3 steps कर रहे हो question में solve करने के, then it is of 3 marks. Let us do
One more. Again, find x, y, and z. X, y, and z. I'm taking this question because इसमें थोड़ी सी और property use हो रही है beyond the question which we did now. ठीक है? Please draw a diagram. Draw a dotted line over here. Name of the figure is not given to you. Only dimensions are given. Only your labeling is there. And this is 112 degree. And this is x. By chance, in angle, you don't have space to write down. Arrow लगा के उसको बाहर लिख सकते हो. So that teacher comes to know कि which is y, which is x. Paper से copy down करने में sometime it becomes wrong. So be careful about that. Okay? Find x, y, z in given parallelogram. Okay? यहाँ पे पी क्यू और एस नहीं दिया हुआ ए बी सी डी कुछ नहीं दिया हुआ सिर्फ एक्स वाई जेड आपको निकालना है. Anybody who knows it? थोड़ा सा सोचो. Give some time on this. 1 minute, 2 minutes. Think it. This is a parallelogram. You know two properties of parallelogram. One is opposite angles are equal. Other is sum of adjacent angles is 180 degree. Which you can apply. Deputy section. First girl, first bench. I know you are thinking something, है ना? You have little, थोड़ा आपको guess हो रहा है बिल्कुल सामने ये angles देख के कि it is for sure. किसको surety हो रही है? Yes, it is like this. हाथ खड़े कर दो. Very good. जिनको Z, Y की surety हो रही है, Y angle तो बहुत सामने दिख रहा है. Please raise your hand. Who can see Y? Very good. Very good. Very good. Y angle is seen. No need to calculate. कोई addition subtraction नहीं. Y is seen. Opposite angles are equal. Please write down. Start from here. ठीक है? जरूरी नहीं कि पहले हमने x को देखना है. Whatever you see easily, start from there. Y is equal to 112 degree. Reason opposite angles are equal. Are equal. Don't become lazy in writing. Reason is giving the knowledge you have. Teacher comes to know. You have depth of knowledge about this. Why you have come to know. Now, y will be equal to what? You told me कि adjacent angles का sum 180 degree होता है. क्या ये adjacent angle हैं दोनों? Raise your hand. Are these two angles adjacent? पूरा का पूरा y and पूरा का पूरा this corner. This corner is giving me 40 plus z. Yes, very good. Please write down y plus 40 degree plus z. क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल है. Is equal to 180 degree. Adjacent angles. अभी इसको short कर सकती हो आप reason को. No need to write the full sentence the way we wrote earlier. छोटे से sentence में you can complete adjacent angles. ठीक है? Put the values. सबकी values डाल दो यहाँ पे. Find the value of z. You can find it now so that you can find x also. Please calculate. Find z also. Raise your hand who have found. Very good. इतनी टाइम क्यों लग रहा है बाकियों को? Please hurry up. Addition and subtraction.
Very good. Lotus section se I can see hands. Daffodils I can see. Daffodil second bench. Very good. Boy, please come. What is coming, Z? 28 degree. Wonderful. That is 28 degree. इसको बॉक्स में डाल दो. Y को बॉक्स में डाल दो. जो जो आपके निकल चुके हैं उनको बॉक्स बनाते जाओ. Very good. These are the answers. Now the problem of X. How to find X? How to find X? ये छोटा सा एंगल है. ये वाला सिर्फ इसका पार्ट ऑफ हाफ नहीं है. ये पूरे एंगल का हाफ नहीं है. वी कैन नॉट से इट इज उसका हाफ ऑफ एंगल बन रहा है. एक्स इज अ पार्ट ऑफ दैट एंगल. मान लो वो कितने भी डिग्री है, 70 डिग्री का है, तो वो एक्स जो है वो 70 का कुछ पार्ट है. 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है. वी डोंट नो. बट एक्स किसके इक्वल है? प्रॉब्लम ये है. व्हाट शुड वी राइट? प्लीज see it carefully. If I draw a line like this, if I say कि these two are parallel, angle 1 will be equal to angle 2 or not? Yes, these two are parallel lines. This is transversal. Angle 1 will be equal to angle 2. What is their name? What kind of angles are they? Are they alternate? पढ़ा हुआ है आपने? Yes, these are alternate angles. So you can say X is equal to Z is equal to आपके पास आ जाएगा फिर से 28 डिग्री. तो X आपके पास आ गया 28 डिग्री. रीजन लिखो यहाँ पे. Alternate angles are equal. Alternate angles. इतना भी काफी है. अगर आप alternate angles लिख रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है. इक्वल तो वो ऑफ कोर्स होंगे ही. ठीक है. ये छोटी सी डायग्राम बना लो बेटा साथ में ना. बिकॉज सच एंगल्स जो है वो मैं तो आपको दिखा रही हूँ बेटा, एग्जाम में वो दिखते नहीं है. एंड यू नो, एक दो प्रैक्टिस करोगे ना इनकी, इट विल सेव योर टाइम. एग्जाम में आपको क्विकली दिख जाएगा कि ऐसा ही होता है. ओके. दिस इज ओवर. यू हैव फाउंड ऑल 3 एंगल्स. नाउ प्लीज राइट डाउन नोट. Very, very important note. In a parallelogram, when diagonal and its angles, small angles you can see, are given or found. ये रूल है कि जब भी आपको कोई पैरेललोग्राम गिवन होता है, उसमें डायगोनल ड्रॉ किया होता है, और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद उसमें कुछ एंगल हमें गिवन होते हैं और कुछ हमें निकालने होते हैं. ठीक है. इसकी शेप डिफरेंट बना लो थोड़ी सी. हमने मान लो ये वाला डायगोनल बना दिया. इसका मान लो एक ये एंगल दिया हुआ है, और ये लिखो यहाँ पे 1 and 2. यहाँ पे लिखो 3. यहाँ पे लिखो 4. Here you can write 5. Here you can write 6. Please draw this diagram. Lotus section, don't talk, don't disturb the class. No. You are doing very important thing. Look straight, lotus section, I can see you. Please look straight. Whenever such figure is given to you, एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसके अंदर एक डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है, छोटे छोटे एंगल्स है 3, 1, 2, 4. ठीक है. कुछ आपको दिए होंगे, कुछ आपको निकालने. ठीक है. Whenever such question comes, no? So what would you do? Write down, in a parallelogram when diagonal and its angles are given or found, then क्या करना है आपने? Angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4. ये तो पता ही आपको एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है. 1 plus 3 total angle is equal to total angle 2 plus 4. क्या रीजन है इसका? अपोजिट एंगल्स. ओके. और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में?
You can write down angle 1 plus angle 3, एक angle plus angle 6 is equal to 180 degree. लिख सकते हो? Raise your hand. Can you write it? किनका sum 180 degree है? Yes, you can write. Reason is adjacent angles. ठीक है बेटा? Similarly, और क्या लिख सकते हो आप? 5 plus 2 plus angle 4. This is also equal to 180 degree. Same reason. और क्या लिख सकते हो? Angle 1 is equal to angle 2. Alternate angles. Alternate angles. 1 is equal to 2. Also, angle 3 is equal to angle 4. This is a note. Note means this is a fact which you can apply in different questions. Okay, please understand करो. साथ साथ में फिगर को भी देखो कि कहाँ कहाँ उनकी पोजीशन है और क्या क्या हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, we have done a lot about this. You want to do more questions of this quadrilateral? If yes, raise your hand. Let me do little about trapezium also. Have you written all of you? Please raise your hand. Okay. Okay, बच्चे लिख रहे हैं. Lotus section, have you done? Very good. Sunflower, written beta? Very good. Let us do one question of trapezium. In the given trapezium, trapezium is hardly used. बहुत कम यूज होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज माइंड से निकल जाती है. Right? We have a trapezium over here. Shape is like this. Okay, and angles are given to you. 2x and this is 3x. A, B, C, D. Find all the angles of the trapezium. Yeah, if you have a very small angle over here, आप लिख नहीं पा रहे हो, इसको arrow लगा के बाहर भी लिख सकते हो. Okay, it is showing clearly किसकी क्या dimensions है. Yes, anybody? From trapezium, what is the property of trapezium? Do you know? Sunflower section. Sunflower section, first boy. What is the property of trapezium? Okay, you can say it. Okay. Ajo, beta. Yes, if you know, you can tell me. Parallel sides are equal. Very good. थोड़ा और बोलो. What do you know about trapezium, beta? Trapezium की प्रॉपर्टी क्या होती है? Parallel sides are not equal. Parallel sides are not equal. Okay. Which are the parallel sides? Can you tell me? Which two sides are parallel here? One up, top and bottom. Okay. Sit down. Sit down.
Do you see AB is parallel to DC according to the figure? हाथ खड़े करो, दिख रहा है सबको? Yes, you can write down AB is parallel to CD. How all the angles of a trapezium? ट्रेपेजियम की कौन सी प्रॉपर्टी आप लगाओगे? Sunflower section. Who is coming from sunflower? आपका mic भी on है. One of you can come forward to tell me trapezium की क्या प्रॉपर्टी होती है? Angles की. Two angles are given to you. You have to find all the angles. Okay. See here, beta. First of all, you should know trapezium is not a parallelogram. ये तो पता ही है आपको, क्योंकि एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है. It is not a parallelogram. We cannot say कि opposite side angles are equal. वो प्रॉपर्टी तो हम लगा नहीं सकते. ठीक है? Write down. Note. What we're going to use in trapezium? In trapezium, write down. ये नोट आपको ये बता रहे हैं कि ये फॉर्मूलाज हैं इनके, ये इनके फैक्ट्स हैं, रूल हैं जो आप हमेशा ट्रेपेजियम के केस में लगा सकते हो. तो इन ट्रेपेजियम होता क्या है? AC is parallel to CD. Therefore, angle A plus angle D is equal to 180 degree. क्यों है ये? You can tell me. I wrote here कि ये दोनों पैरेलल है, इसलिए A plus D का सम 180 डिग्री है. Why? रीजन क्या लिखना चाहिए बेटे यहाँ पे? हाथ खड़े कर दो. वेरी गुड, जिसको पता है. यस, आ जाओ बेटा. लोटस सेक्शन. यस, आई कैन सी फ्रॉम रोज ऑल्सो. आई विल कॉल यू बेटा, रोज से भी. माइक ऑन करो. हाँ जी बेटा, दोबारा बोलो. एडजेसेंट एंगल्स. ये पैरेललोग्राम नहीं है. दिस इज नॉट पैरेललोग्राम. You cannot say कि adjacent angles are supplementary. Please sit down. Mic off करो. So row section, I saw one hand. Last boy, please come. Anybody? Okay, that girl is also coming. Both of you, yeah, one by one you tell me. Mic on करो. Very good. And adjacent angles. Adjacent angles. What else? किसी के माइंड में कुछ और आ रहा है? Sit down, beta. Please sit down. Now listen to me very, very carefully, beta. In trapezium, you have read in 7th class कि जब two lines parallel होती हैं, इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. हाथ खड़े करो. Did you read it in 7th? याद आया आपको? When two lines are parallel, interior angles का sum 180 degree होता है. Very good. Hands down. Okay. Write down sum of interior angles on same side of transversal. Please recall it. ट्रेपेजियम में हमारी यूनिक कंडीशन लगती है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, इसमें हम एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते. That will be wrong. Here we are putting the property of, you can draw a rough diagram, you can do like this, you can write down the 1 and 2. Angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. अपनी नॉलेज के लिए लिख लो इसको. अभी नोट्स बन रहे हैं, आपकी नोटबुक में लिख रहे हो. ये सारी चीजें आपकी नेक्स्ट क्लास में भी काम आनी है. ठीक है? Their sum is 180, no doubt, but their reason has changed. पैरेललोग्राम में कोई और रीजन था, ट्रेपेजियम में कोई और रीजन है. Okay बेटा, please remember it. Now A plus D is equal to 180 degree. Now apply it. ये आपका नोट हो गया सारा का सारा. Now come to the solution. Now you can do it. आप खड़े करो. किस किसको लगता है कि अभी हम कर पाएंगे? Very good, very good. Please start it.
2x plus 3x is equal to 180 degree. I'm doing over here 2x plus 3x. आपके पास 180 डिग्री आ गया. इसका रीजन आपको पता चल चुका है अभी. Find the value of x from here. क्या क्या आ रहे हैं ए और डी, क्या क्या आ रहे हैं एंगल्स? जिसने निकाली है हाथ खड़ी कर सकते हो. Yes, I can see lotus section beta. Yes, that boy. वॉल के पास नियर द विंडो. दो एंगल्स कौन कौन से आ रहे हैं? Ma'am, 36 degrees. X is equal to 36 degree. Yes. Okay, please find out A and D also. What is A and what is D? I hope many children have found. A is coming out to be 72 degree and this is coming out to be 108. इनका ये आंसर आ रहा है 72 and 108. Very good बेटा. You have found A and D. अभी प्रॉब्लम है B और C की. ठीक है? Write down. I am cleaning over here. How to find now? A and D you have found. You know A plus B plus C plus D is equal to what? 360 degree quadrilateral है ये. ठीक है? This is a quadrilateral and you have come to know A and D. A is 72 degree. This is B plus C and this is D you have come to know 108 degree is equal to 360 degree. You can find B plus C from here. दोनों का एडिशन निकाल सकते हो. Okay, and when you find B and C, you can find B and C also because दोनों का सम जो है वो एक bigger angle होगा और एक smaller होगा. You can say one is this is B is acute angle and this is obtuse angle. Can you find it? I'm giving you clue. You can complete at home also. B and C का भी sum 180 degree होगा because again these two lines are parallel and their sum is 180 degree. Okay, please complete at home. I am giving you clue over here. You can note down till here. आपके पास sum जो भी आएगा इसका उनको you can convert into two parts. Why? Because आपका जो B वाला angle होगा वो acute होगा according to your diagram and this will be your obtuse angle. Right? You leave the space, leave two lines and please complete it. Okay, I am giving you clue over here. एक एंगल आपका फिर से 108 डिग्री आएगा ऑब्ट्यूज वाला और दूसरा वाला आपका 172 डिग्री आएगा. You can write down the answer. Please find out. Write down the clue. Leave 3-4 lines and complete at home. Okay. Now I want to do little questions of. You want to do some questions of SI and CI. Simple interest and compound interest you want to do?
Raise your hand if you want to do few questions, 1 or 2 questions. हमने ये किया था वैसे पहले अच्छे से. Okay, all right. We'll do that. Come to that now. More of compound interest is used in 8th class, right? Write down question of compound interest. Find the interest and amount. Find the interest and amount, because your mind should roam around in all the chapters. Interest and amount to be paid on rupees. Yes, Peter. Please write down. Find the interest and amount to be paid on rupees 15,000 at 5% per annum. Per annum. We write it PA in short form. After 2 years. After 2 years. Find the interest and amount to be paid. You can understand from the question, here it is written, find the interest. Interest, simple interest लिखा हुआ है, एक interest word लिखा हुआ है. What comes in your mind? किसका फॉर्मूला लगाओगे? SI का लगाओगे या फिर CI का लगाओगे? माइंड में क्या आता है आपके? जिनको लगता है कि SI लगाएंगे हाथ खड़े करो. वेरी गुड, हैंड्स डाउन. किनके माइंड में आता है कि CI लगा सकते हैं SI के बदले में? थोड़ा सा आपको अगर माइंड में आता है कि CI वी कैन डू. ओके, दैट्स गुड. बिकॉज यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कंपाउंडेड एनुअली. इट इज रिटन सिंपल. फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट. सिंपल लिखा हुआ है, कुछ वो नहीं है कि कंपाउंडेड एनुअली दिस दैट. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ. SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100. P is given to you on rupees 15,000. R is given to you percent and time is given to you. सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. बस वैल्यूज डालनी है एंड योर थिंग इज डन. ठीक है, आई एम गिविंग यू क्लू. इसका आंसर आएगा आपका 1500 जब आप घर पे इसको निकालोगे. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. अभी ये आधा क्वेश्चन हुआ है आपका. वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑल्सो, कि कितनी अमाउंट आप रिटर्न करोगे. अमाउंट इज P plus SI. You can say SI, you can say I, doesn't matter. जरूरी नहीं कि उसको SI लिखना है. P plus I. दोनों को जब आप ऐड करोगे, your answer will be 16,500. ठीक है. At home you have to practice it. When you will be practicing, you can find the answer. Clue लिख लो. You can do calculation yourself at home. ठीक है. Similarly, next question is different. Okay, you can get a clue कि इसमें क्या करना है. Find CI, compound interest. Find compound interest on a sum of rupees 8,000. Sum of rupees 8,000 for 2 years. 2 years at rate is given to you 5% per annum. 5% per annum. Per annum के साथ they have written very important word, that is compounded annually. बहुत important word लिखा हुआ है यहाँ पे, which will be telling you कि हमारा अभी कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए. Compounded annually.
कि आपने कैलकुलेट ही उसको कंपाउंड इंटरेस्ट से करना है, ठीक है। आई एम गिविंग यू क्लू ओवर हियर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है? रेज योर हैंड, यू नो इट। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन हम डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, उससे पहले कुछ और निकालना पड़ेगा। ओके, राइट ऑन द फॉर्मूला फर्स्ट, स्टार्ट डूइंग, कंप्लीट करो एंड यू कैन मैच द आंसर। You can have good practice with me over here. Compound interest का formula सबको पता है. You have done many times. It is amount minus principal. But before that, we have to find amount also. It is 1 plus r by 100 raised to power n. Sometimes you write t also instead of n, which is showing time. ठीक है, तो पहले आप amount निकालोगे, उसके बाद उसको CI निकालोगे, ठीक है। To find it now, I will write the answer also. We can match it. Who are getting the same answer? Very good. Amount you have found. Find CI also. Very good. I'm going to write that also. ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल फॉर्मूलाज आते हैं आपको, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बस एक छोटे से आपको 8th क्लास में थोड़ी सी और वेराइटी है कि आपकी डेप्रिसिएशन और उसके फॉर्मूलाज आते हैं। वैल्यू इज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख लो, नोट की फॉर्म में, राइट ऑन नोट। व्हेन वैल्यू ऑफ अ थिंग is depreciated means कि कम हो गई है, किसी की वैल्यू कम हो गई है, कुछ अमाउंट कम हो गई है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है, ग्रोथ कम हो गई है बैक्टीरिया की। डेप्रिशिएटेड का मीनिंग मैंने काफी बार बच्चों को देखा है, वो उसमें ऐड का साइन लगा देते हैं। डेप्रिशिएशन का मतलब डिक्रीज, डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो उसके केस में वी फाइंड द 1 minus r by 100 raised to power n. जब भी आपको डेप्रिसिएशन की बात हो, we will put minus in the formula. Okay? And जब आपके पास increase हो, when value is increased, जब increase हो रही है वैल्यू, तो क्या करोगे? Amount will be equal to P1 plus R by 100 raised to power n. Increase हो रहा है तो it is plus sign, depreciate हो रहा है, decrease हो रहा है, then it is negative sign. ठीक है बेटा? These are the questions which you are doing in compound interest. Okay, all the best everyone. You have done a lot. You have understood many things. Probability chapter is also simple. In it, the simple question comes. Okay, all the best everyone. You can note it down, and then your science class. Science class, sixth class. Sure. Bye beta, all the best.